You're watching Reality Check. It's been close to a week since the NIA arrested Stan Swamy, the 83-year-old Jharkhand-based tribal rights activist and Jesuit priest, on charges of terrorism. In this time, the protest and the outrage on the streets and everywhere has only intensified. What we're playing for you now are videos of different protests that have taken place on the streets of Ranchi, Jharkhand since his arrest, where activists as well as non-BJP parties rallied in Stan Swamy's support, demanding his release. Also, a group of 2,000 signatories ranging from economists to lawyers and activists have signed a statement opposing his arrest. And today, unusually, a sitting chief minister, Hemant Soren of Jharkhand, has come out in Swamy's defense, addressing a press conference where he was joined by top opposition leaders from Kanimori to Supriya Sule and Shashi Tharoor to strongly condemn Swamy's arrest and demand his release. केंद्र में बैठी एनडीए की सरकार किस तरीके से देश में आदिवासी, दलित, पिछड़े लोगों की बात करने वाले लोगों की आवाज़ों को बंद कर रही है। हमें स्टैन स्वामी को सकुशल घर वापस करने की मांग रखनी चाहिए और आज इस तरीके के घटनाएं ना घटे, ये कैसे सुनिश्चित हो, ये भी तय होना चाहिए। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक से लेकर राज्यसभा तक हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि अपनी अपनी जगह पर आज इस विषय को जरूर फ्लैग करें, रखें। आज पूरी व्यवस्था को ये अपने पैरों तले रौंदने की तैयारी कर रहे हैं। Okay, all of this not only speaks to Stan Swamy's legacy but also to the serious question mark over the charges against him. Swamy has been booked in a 2-year-old case, what is known as the Bhima Koregaon case of 2018, where an annual Dalit event turned violent after clashes with the upper caste. The police had initially booked local right-wing leaders but later charged and arrested 16 people who they claimed were part of a Maoist plot to incite violence. This includes scholars, lawyers, academicians, cultural activists, and human rights defenders. Now, bafflingly, 2 years later, they've arrested Swamy in the same case. In his 10,000-page charge sheet, the NIA has claimed that Swamy is a member of the banned CPI Maoist group, was in communication with other cadres and had received funds from them. He's the convener of a persecuted prisoners solidarity committee, which the NIA claims was a front organization for the Maoists, and also claims to have recovered incriminating documents from him. Now, incriminating documents, links to banned outfits, channeling of funds have become well-rehearsed if vague assertions that have become a substitute for credible evidence. Anticipating arrests, Stan Swamy released a video in which he rebutted these charges against him, as well as outlining what he believes are the real reasons for the arrest. I was interrogated for 15 hours during a span of 5 days. Apart from my biodata and some factual information about Bagaita, about Patalgadi issue, about Bhima Koregaon movement, etc., for which whatever they asked I provided, and some persons whom I had come across in this process. They started to put before me certain extracts supposedly taken from my computer. So these extracts were all interpolations put into my computer. In this process, I have filed a case against the Jharkhand state in Jharkhand High Court on behalf of about 3,000 young Adivasis who are languishing in the jail. It is this which became a bone of contention with the state, and they wanted to put me out of the way. And one easy way was to implicate me in some serious cases. And this case, it so happened, the Bhima Koregaon, a place that I have never been to in all my life.
I was implicated there. I was raided twice. First it was done by Pune police, then it was forcibly taken over by NIA. And finally, now they are even asking me to go to Bombay for further interrogation, which I am refusing to go because my age, I have certain ailments. There is the epidemic which is ravaging the country. And the Jharkhand government itself has given directions that elderly people may not travel or appear in public. And I hope all of us, all those who know me and who are concerned about me, will also be ready to face what is to be faced. All right, joining me tonight on Reality Check, we have with us Mr. Banna Gupta. He is the Minister of Health and Family Welfare of Jharkhand. We also have with us Shant Prakash Jatav of the BJP, National Chairing in charge of the SC Morcha of that party. Colin Gonsalves, Senior Advocate, Supreme Court is with us. Jean Drez, activist and social scientist is with us. And Vikram Singh, former DGP, Uttar Pradesh. Banna Gupta जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। ये बताइए कि ये तो काफ़ी सरप्राइजिंग है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर एक तरह से एक प्रदेश सरकार किसी के समर्थन में आ रही है, क्योंकि इनके खिलाफ काफ़ी सीरियस चार्जेस हैं, टेरर चार्जेस हैं। लेकिन आप क्या इसको पूरी तरह से गलत मानते हैं, इसीलिए आप स्टैन स्वामी के सपोर्ट में आ रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर स्टैन स्वामी का जो बैकग्राउंड है उसको बहुत विवेचना करने की आवश्यकता है। उन्होंने किस तरह के मूवमेंट को चलाया? उन्होंने चलाया जो सुदूर गांव में रहने वाले हैं, जंगलों में रहने वाले लोग हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं। उन्होंने उसके उत्थान के लिए काम किया है जी। उन्होंने काम किया है CNT SPT एक्ट पर, जो सरकार जो है भूमि अधिग्रहण बिल लाई थी उसके विरुद्ध काम किया। उन्होंने काम किया है लैंड बैंक के विरुद्ध में काम किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो तथाकथित कॉर्पोरेट दोस्त थे उनके विरुद्ध में, जो हमारी भी जो झारखंड की संस्कृति है, जल जंगल जमीन, उसको बचाने का काम किया है। तो आप कह रहे हैं कि एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि इन्होंने ये सारी चीजें कही हैं, किया है, लेकिन NIA तो कह रहा है कि ये कर रहे हैं, नहीं रहे, वो अलग बात है, लेकिन नक्सल लिंक्स थे इनके, ये नक्सलियों से जुड़े हुए थे। अब देखिए, कहने को तो देखिए वो कहा जाता है ना कि सच कहना बगावत है, तो समझो हम भी बागी हैं। तो अब तो चूंकि पहले कहा जाता था CBI जो है पिंजड़े का तोता है। अभी आप बताइए, 83 साल के बुजुर्ग आदमी जिसका जीवन मानव मूल्यों की रक्षा करने के लिए लगा हुआ हो, जिसने गरीबों के उत्थान का काम किया हो, और जो आप क्या इस बात से उम्मीद कर सकते हैं कि एक 83 साल का बुजुर्ग आदमी क्या इस तरह से कोई भी आर्म्स और एम्युनिशन या इस तरह से नक्सल को प्रोटेक्ट करेगा? ये पूरी तरीके से एक राजनीतिक साजिश है। और भारतीय जनता, मेरी बात सुना जाए, भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची है, क्योंकि उनके तथाकथित दोस्तों को झारखंड की जो वन संपदा है, हमारा जो भूमि है, हमारा जल जंगल जमीन है, खिलाफ ये लड़ रहे थे, से बचाया। ओके, ठीक है, आपका पॉइंट आपने रखा। नहीं, समझ गया मैं आता हूँ। चंद प्रकाश जाटव जी, आप क्या इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे कि एक 83-year-old जो हैं, काफी उनकी हेल्थ भी खराब है, ये झारखंड में बैठ के महाराष्ट्र में किसी गांव में माओइस्ट कंस्पिरेसी को ये कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं? ये कौन इसको सीरियसली लेगा, ऐसे चार्जेस को? देखिए जाटव जी, हाँ देखिए, जिस तरीके से भीमा कोरेगांव की जो घटना हुई 2018 में जी, पूरे देश में केवल एक ही स्थान ऐसा है जहां पर ब्रिटिश की जीत का जश्न मनाया जाता है, और वहां पर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को जी इन लोगों ने, लेफ्टिस्ट ने वहां पर इकट्ठा किया, गुमराह करके। वहां पर महारों ने जरूर उनका ब्रिटिशर्स का सहयोग किया था, मगर सिर्फ एक सेकंड जाटव जी, ये तो भीमा कोरेगांव तो हर साल होता है, इसमें इन्वॉल्व नहीं है। वो तो सालों से चल रहा है। नहीं, ब्रिटिशर्स को जीत का जश्न अपने आप में ही एक देशद्रोह है,
और वहां पर अगर इस टाइप के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, वो देशों में ही आता है। और उसका उसका आप कह रहे हैं जो इवेंट है मनाने, वो इवेंट आप कह रहे हैं कि वो पहले नहीं, वो तो कब से चलता आ रहा है। आपको तो जानना चाहिए, आप खुद SC/ST मोर्चा के 2014 देखिए 2014 के बाद में ये मूवमेंट वहां पर इन्होंने शुरू किया है। उससे पहले कुछ लोग वहां पर महार कम्युनिटी के, वो बेशक से उस कार्यक्रम के आयोजन करते रहे, हाँ, मगर तो वही महार तो थे। कम्युनिटी पूरी एंटायर शेड्यूल्ड कास्ट को रिप्रेजेंट नहीं बट करती महार है, समझने कम्युनिटी की तो आवश्यकता SC है। कम्युनिटी है। बट मगर ये वो यहाँ- के लिए वो छोड़िए, मुझे बताइए कि ये जो है स्टैन स्वामी जैसे जो ट्राइबल्स के साथ काम कर रहे हैं झारखंड में, उनका इससे क्या लेना देना? इन्होंने वहां पर लोगों को गुमराह करके वहां पर पहुंचाया। 2018 में इतनी बड़ी संख्या में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों का वहां पर अच्छा, तो झारखंड में बैठ जो वहां पर के उपद्रव उन्होंने हुआ, उनको वो इतनी महाराष्ट्र बड़ी के संख्या गांव में वहां पर पहुंचाया। पहुंचाने का काम, अच्छा। फंडिंग का काम, और ये सब चीजें वहां पर पकड़ में आई और ओके। उसमें इनके इन्वॉल्वमेंट है। ओके, वो तो जो नक्सली टेररिज्म की जो बात है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के बच्चों को, नौजवान बच्चों को गुमराह आपने कहा करने का गुमराह काम किया। जो कर रहे हैं, वो अच्छा, नाउ इन्होंने पकड़ा है। ठीक है, Jean Therese, you know, because you've also now been in Jharkhand for some time, so you probably had a chance to meet and speak with Stan Swami. Stan Swami says that he is actually someone who is fighting for the release of people, tribal youth, etc., who were wrongly accused of being Maoists. And in some ways, Stan Swami has himself now found himself incarcerated. Yes, Vasu, I think we are getting a little sidetracked. Let me say first that not only I've spoken and met with Stan Swami, I'm an old friend of his, and we have collaborated on many issues together, like the right to food, Jal Jagal Zameen, and communal harmony. So let me first say that he's a very respected citizen of Ranchi, respected even by those who disagree with him. He's a very gentle, honest, sincere, principled person. Right. And I mentioned that we worked on communal harmony in particular because when I looked at the charge sheet, Yes. and I found that he's accused, among other things, of having promoted enmity between Yes. different castes and Between communities. yes. That for me is enough to understand that this charge sheet is a morass of absurd accusations. I don't really need to go further. Right. I don't think on this show there's any point in trying to debate the evidence for or against the charges because it's not even clear what the charges are. My question is, why is this old man, 83 years old, harmless? He is not trying to hide. He is not running away. He is cooperating with the investigation agencies. He is not in good health. He has Parkinson's disease. Right. He's being thrown into a jail where he could easily die, all the more so because of COVID, but even without COVID. Right. And for me, Stan Swami is a symbol of all the under trials and the injustice that has been done to under trials for decades in India, without it being even an issue, Okay. because these are people who don't matter. So I think to me, it's not just Stan, it's all the under trials in India and the way in which this kind of incarceration is being used as a done. tool of social control. Right. Vikram Singh, as a policeman, a former policeman, but I suspect in some ways still a policeman, as far as, again, not getting into the evidence, but in terms of the actual requirement to arrest, because this is something many people have questioned in the case of someone like Stan Swami, that if, as Jean Therese says, he's not running anywhere, he's available, is it strictly necessary to arrest somebody like that 2 years after the incident and then, you know, take them to Bombay and all of that? Vasu, I have my own reservations. In the first place, let us understand that he's 83 years old. He is far away from Bhima Koregaon. He is not going underground. And under what circumstances can a person be charge sheeted when he has never been to Bhima Koregaon? Agreed, he may have in possession of certain papers, but if there is a close search, you and I and everybody on the planet may have such papers. That doesn't necessarily mean that we are involved in any conspiracy. Generally, my stand is that I support all central agencies. But in this case, they seem to be horribly wrong for 3 reasons. Let me tell you, as being an investigator for 36 years, his age does not support him. Number 2, his distance from the scene of crime does not support him. Number 3, his fan following and his admirers. The Chief Minister of Jharkhand is supporting him. He does not have a criminal antecedents. He does not have a criminal background. He does not have a general reputation of being a terrorist. His general reputation is that of being a pacifist Right. and of being
servant to the people. So- I see no reason Okay. why he should be booked. My advice to NIA would be, please be very thorough in your investigation. Don't bungle up this time. Because Okay. if you do, then you had it. Okay. Colin Gonsalves, one can go on sort of pointing out the fact that there are infirmities in the manner in which they've gone about it, or whether even the evidence is credible or not. But the fact is, Colin, that once these arrests are made, and we've seen that in the case of the other accused in the Bhima Koregaon as well, you go in for years. One can keep going to the courts, but the courts don't seem willing to be able to grant any leniency. That's right. In that sense, this is a very important case, and it should be a turning point for rubbish cases like this. They got away in case after case earlier. Why? Because from the police hacking department, some young 15-year-old will be told to take a letter, please type it, and plant it on your computer. And that's the way they got away with saying that these people are part of a conspiracy for all these years. Right. Now's the chance for the judge to say, I'm not accepting this. We're living in the age where anyone can type that letter and put it on the computer of the Director General Police of the state. Put it on a journalist's computer. Put it on a lawyer's computer. Put it on a judge's computer. Why should I accept that in the absence of any other evidence against that? Any weapon? No. Any violent act? No. Any attempt to trouble or disturb the state? No. Any knife, any bomb, any machine gun? No. Any violent act by a group that he organized? No. In the absence of any other evidence showing this man has an inclination towards terrorism, I'm not going to accept this rubbish evidence Okay. planted on his computer that this letter written is an act of terrorism. And he's not written it, it's just other person's letters written to other persons, Right. insinuating something about raising money and so on. This is not terrorism. A judge now has a wonderful chance to say in Stan's case, I'm Okay. rejecting this evidence and I'm granting bail to this man. It should be a Okay, turning let's see if that does indeed happen. But, Banna Gupta ji, क्या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, आप आ चुके हैं, पब्लिकली आप एड्रेस कर रहे हैं, आज मुख्यमंत्री जी भी आके उन्होंने एड्रेस किया, लेकिन उसके आगे आप क्या कर रहे हैं स्टैन स्वामी के सपोर्ट में? देखिए, निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है और जिस तरीके से उनके धीरे धीरे पूरे देश में जिस तरीके से तानाशाही प्रवृत्ति का परिचय हो रहा है, एक तरफ स्टैन स्वामी को देख लीजिए, दूसरी तरफ जो नहीं, धर्म वो ठीक है, मेरा सवाल था कि आप क्या कर रहे हैं उनके हेल्प नहीं, में, मैं वही अगर आप बता कुछ रहा कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जो पूरी तरीके से मानव अधिकारों का उल्लंघन है और पूरे संविधान, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संवैधानिक संस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उसको पिछड़ेगा। और हम लोग इसके विरुद्ध में, बिल्कुल हमारे अध्यक्ष आदरणीय रामेश्वर उरांव जी ने भी इसके विरुद्ध में कहा है कि हम लोग इसके विरुद्ध में जरूरत पड़ेगी तो हम इसको जनतांत्रिक तरीके से इसका प्रोटेस्ट पूरी तरीके से करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बिल्कुल कहा है कि हम लोग इसको विरोध करते हैं और उन्होंने ये भी प्रार्थना किया कि जो भी हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, वो राजनीति से ऊपर उठकर मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए, झारखंड के हितों की रक्षा, चूंकि ये आप इसको करेंगे, ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप पूरी तरह से करेंगे। शांत प्रकाश जाटव जी, क्या आप मानते हैं कि दिस कुड बी अ टर्निंग पॉइंट कि आपने पहले तो बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिए हैं, चार्जेस अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन ये कुछ हद से ज्यादा पार हो गई इनके केस में? कोई हद से ज्यादा पार नहीं हुई है। जिसने भी टेररिज्म करने की, आतंकवाद फैलाने की योजना बनाई है, जिन्होंने अंजाम तक पहुंचाया है, सबके खिलाफ जांच होगी और जांच होने के बाद में उन सब लोगों को सजा भी भुगतनी पड़ेगी। सजा भी भुगतनी पड़ेगी, से नहीं उसको तय किया जाएगा। ये जिस तरीके से कानूनों की व्यवस्था की है, यूएपीए का भी अभी एस्टेब्लिश किया है, ये सब उसमें जो है इनके खिलाफ जो भी देश में जो है आतंकवाद फैलाने की कोशिश और प्रयास करेंगे, फंड जो जनरेट करेंगे,
उन सब ठीक के है। खिलाफ जो है जी बिल्कुल अच्छा नक्सल ठीक है, आतंकी चलिए जो इस वक्त में ये स्थिति दिखाई दे आपका रही कहना है है, उन सब आखिरी के सवाल खिलाफ कार्रवाई भी होगी, ओके, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम भी उठाए ओके, जाएंगे। आखिरी सवाल से मिले हैं क्या? John weapon Drez, मिले क्या? कोई are you what do you weapon think? मिले हैं There या does कुछ seem to ऐसा be a मिला है considerable क्या? amount of support for him, for नहीं, वो Stan पता Swami. लगेगा ना। Is it वो going to जांच make के any बाद difference? पता लगेगा, जांच में कुछ मिला है तभी ये अच्छा उनको एक अरेस्ट सेकंड, किया एक गया। सेकंड, yes, John Drez. Well, obviously, I'm hoping it will make a difference, first of all, in helping to secure his release as soon as possible, and also in helping to review some of these laws, including the UAPA, that are making this kind of thing possible. And I think that here, the role of the political parties is extremely important, because only the political parties and the parliament can repeal or amend some of these laws. And that's why the event that happened earlier today, with many political parties coming together to oppose UAP, I think that was very significant. Right. But I think that opposition needs to be consolidated. And one hope in that respect is that the political parties, I think, are beginning to understand that they are also going to be targets of these laws and victims of these laws. And if they don't oppose them now, then it will be their turn sooner or later. Okay, well, let's see how this plays out. But thank you all so much for joining me. बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े. That's all the time we have on Reality Check. Thanks for watching. Good night.